Japan offers a sustainable education. Thanks. So much, Please come here. Ready रहिए. Ready एकदम ready. Everything ready. नहीं छोड़. डॉक्टर तो छोड़ के. कहाँ पर है? सर अरे थोड़ा इधर आती है. Yes, sir. Autonomous vote and autonomous survey bridging monitoring night navigation is remote. Nighttime navigation is remote. And automated gauging stations for them. Several boats are installed. Please. This is the presentation. Sir, yes, sir. Welcome to Coaching. Namaskar, sir. Coaching podcast. Welcome. Well, Sir. this is new. Thank you. जितने भी है हमारा गेट के पास सारे पेड़ रोड गेट के ऊपर नहीं लगता है. पहले थोड़ा पीछे कर लो सर. कहती हो तो गल कर लो. मैं कह रहा हूँ तुम गल कर लो. सर एक मिनट कॉर्नर हो गया ना. नमस्कार सर. इमारतों का निर्माण किया जाएगा. ये हटाना अपना मोबाइल. लगभग 5
NICT ऑपरेशन रोजगार प्राप्त NICT के माध्यम से देश से भारत आने वाले सैलानी एक देश से आने वाले प्रवासी अपनी एक छुट्टी के दौरान सेकंड फेज अभी सागरमाला में ही बना सकते हैं और दूसरा फेज शुरू होगा ये 25 तक शुरू होगा और 2025 में दूसरा फेज भी शुरू होगा। उसके बाद ये पूरी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता है। जिससे बहुत बड़ा पार्टी जितना ऑटोमेटेड है जितने भी ड्राइवर है उनको खाने का सब्सिडी करती है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के बाकी स्टेट पे बोर्ड भी उसको एप्लीकेट कर सकते हैं। तो वाधवान को जैन की टीम बनाओ ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में और गुजरात बॉर्डर से साउथ में मुंबई से 150 गाँव महाराष्ट्र में आगे भी उसमें जैन की 35,000 करेगा और जो कंसेशनर आएगा वो 35,000 करेगा। अभी हम एक सुप्रीम ट्रिब्यूनल का एक प्रॉब्लम हमारी सारी स्टडीज वीडियो हो चुकी है जैसे वो हियरिंग खत्म हो गई तो हम लोग गवर्नमेंट क्लियरेंस में जाएंगे और हमने जो महाराष्ट्र के विभिन्न जो दूर दराज के इलाके हैं उनको हमने ड्राई पोर्ट से कनेक्ट किया है हमारे पोर्ट में। 2 ड्राई पोर्ट एक वर्धा में है जो नागपुर के पास में जालना के औरंगाबाद के पास एक नासिक में प्रपोज इस तरह से 3 स्टेट कवर हो जाता है जो हमारी इंटर बंद कर देगा वो तो क्या ये 16 मेगापिक्सल कैमरा है और हमें फीचर भी तुमचं सगळ्यांचं मार्गदर्शन आहे आपल्याला खूप चांगलं आहे NICT के निर्माण कार्य के दौरान कम से कम 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो गया है। इसकी पूर्ण होने के दौरान लगभग 500 लोगों को NICT ऑपरेशन में रोजगार प्राप्त होगा। NICT के माध्यम से विदेश से भारत आने वाले सैलानियों Now we are handling 125 or 300. सर प्लीज सर सर आइए सर एक साथ आइए सर लिखिए कौन सी लिखिए इसका सही यूटिलाइजेशन आज तक नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर ध्यान दिया और जिस तरह से सी ट्रांसपोर्ट जो होना चाहिए था या बाकी सब चिपेस्ट ट्रांसपोर्ट ये इसका समुद्र का है और इसी पर ध्यान देके आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे कोस्ट लाइन का पूरे पोर्ट्स का जो नया छोटे छोटे पोर्ट्स भी बनवाने का जो काम है वो आज कर रहा है और इस 7 साल में जिस तरह से काम किया है वो हमने जो काम किया है आज इसका सब आपको देखने को मिलेगा और आगे हमें आने वाले समय में ये काम पूरा करना है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से डन सर आगे गया सर आइए एक सब आइए सर एक से पीछे भी एक सॉरी सर नमस्कार विशाखापट्टनम प्लीज सर चलो थैंक यू हो गया सर थैंक यू
स्कूटी करिए थैंक यू सर IIT चेन्नई हाँ मैंने बहुत काम किया है ठीक है ओ यहाँ हो गया मेरा बड़े में दो बात सर वेलकम टू कोचिंग पोर्ट अथॉरिटी सर थैंक यू कहाँ गया ब्राह्मणी कहाँ गया नहीं है यार नहीं भाई पीछे पीछे आ जाओ थोड़ा आगे बताओ पीछे होके भी काम होना आगे से भी काम होना है एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का। स्वागत है ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज माननीय श्री श्रीपद नाइक जी, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। कृपया मंच पर पधारें। माननीय सांसद श्री निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। हमारे बीच में मौजूद श्री नलिन कुमार खत्री, माननीय सांसद बीजेपी अध्यक्ष कर्नाटका, बहुत बहुत आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं जो यहाँ पर आज पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में सागर से अनंत गहराई है। सागरमाला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन रूपी सीख से निकला हुआ एक कीमती मोती है। हमारे तिरंगे के बीच का नीला चक्र प्रगति का प्रतीक है और संयोग देखिए कि आज ब्लू इकोनॉमी न्यू इंडिया के प्रगति चक्र को नई गति दे रही है। सागर तट और जलमार्ग द्वारा आवागमन और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज न्यू इंडिया के समृद्धि के नए सोपानों का सपना सच कर रही है। हमारा देश परंपराओं का देश है। अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए हमारा निवेदन है श्री अरविंद चौधरी MD IPA से कृपया माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का स्वागत करें फूलों से और शॉल से। स्वागत है माननीय मंत्री जी का। आपसे ही आग्रह है श्री अरविंद चौधरी कृपया माननीय राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक जी का स्वागत करें। उन्हें शॉल और फूल भेंट करके श्री अरविंद चौधरी आपसे ही निवेदन है कि कृपया राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी का स्वागत करें। वो नहीं मान रहे तो क्या निमंत्रण देते हैं बीजेपी अध्यक्ष कर्नाटका जी, कृपया उनके स्वागत करें, शॉल भेंट करें, फूल भेंट करें। सर इधर सामने पे सर इधर पे और हम अनुरोध करते हैं आप ही से श्री वाली की कृपया सचिव श्री संजीव रंजन का स्वागत करें। और आप ही से निवेदन है कि कृपया चेयरमैन IWI यस सर श्री संजय बंदोपाध्याय का स्वागत करें।
यस सर। श्री सर्जन देख रही है दुनिया तुम्हें उजियारी विश्वास से एक दिन दिव्य बनाकर तौबा दे इतिहास को नई रोशनी की पहरी है लिख डाले आकाश में उठो बांधले सारा सूरज अपने बाहुपाश में उठो बांधले सारा सूरज अपने बाहुपाश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माँ सदगमया तहसी माँ ज्योति करना हमारी प्राचीन मान्यता है। दीप प्रज्वलित करने से देवताओं का आशीर्वाद। Shri Sarbananda Sonowal ji, Hon'ble Minister for State and Waterways and Ayush. Respected Shri Shripad Naik ji, Minister of State for Port Shipping and Waterways and Tourism. Hon'ble Minister Thakur, Minister of State for Port Shipping and Waterways. Respected Shri Santanu Thakur, Honorable Member of Parliament. Shri Swami ji, Honorable Member of Parliament. Respected Mr. Sanjeev Ranjan, Secretary Minister of Port Shipping and Waterways. Mr. Rajesh, Chairman of Mumbai Port Authority and Chairman of ITA. Mr. Bhushan Kumar, Joint Secretary Sagarmala. Respected friends from media, officials, people connected to the Sagarmala family, ladies and gentlemen. I welcome you all to this program, which has been held to commemorate completion of 7 years of Sagarmala program. 7 साल पहले जब सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए पोर्ट गेटवेज हैं, वाटरवेज के लिए लैंड और वाटर को कनेक्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में बिना वाटर के ना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है और न ही दूसरे काम हो सकते हैं। और पिछले 7 सालों में हमने देखा है कि सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए। 2035 तक 802 प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है 5.5 लाख करोड़ के, और अभी 194 प्रोजेक्ट्स 99,000 करोड़ के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और 270 प्रोजेक्ट्स 2 लाख करोड़ के ऊपर के चल रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स के साथ साथ स्किल में काम हुआ है, इनोवेशन सेंटर्स में काम हुआ है, वेसल मैन्युफैक्चरिंग में काम हुआ है, वाटरवेज में काम हुआ है और इस सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला है। सागरमाला प्रोग्राम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसने बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि हम इस सेक्टर में, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सेक्टर में देश को किस तरफ ले जा रहे हैं
माननीय मंत्री जी, अन्य गणमान्य जो लोग उपस्थित हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे MOU होंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। मैं सागरमाला परिवार की तरफ से आप सबको पुनः आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत करता हूँ। बनाने के लिए कृत संकल्प है। इन 7 सालों में सागरमाला कार्यक्रम सफलता की इबारत लिखता गया, बदलावों के नए कीर्तिमान रचता गया। Infrastructure has been strengthened with implementation of rail, road, pipeline and multimodal logistics park projects by various central and state agencies. Sagarmala Development Company Limited, SDCL, invested equity of more than rupees 500 crores in 4 SPV for executing crucial port connectivity. Including the coastal community. So, we are blessed with more than 7,500 kilometers of coastline, and we have more than 200 ports. Out of these ports, 200 ports, around 75 ports handle the commercial cargo, and around 50 ports handle the EXIM cargo. Now, when I say EXIM cargo, as on date, the EXIM trade stands at $1,000 billion, which we call as $1 trillion. Out of that, close to $800 billion export and import is handled through seaport. So that is the kind of importance these seaports carry. So we are continuously working to improve our efficiencies so that the importers and exporters get benefit of that. See, the significance of this, please try to understand. When an exporter is importing something, then if we have inefficiencies, his cost will go up, and then he will not be competitive in the world level, at the world level. Similarly, if for the importer, the cost of commodity will go up. Ultimately, we will be paying for those kind of inefficiencies. So we are continuously working on that. Apart from export and import, the domestic waterways and coastal shipping also plays a very significant role. If we move the cargo through coastal shipping and inland waterways, the cost will be much cheaper than whatever conventional routes we are using, rail and road. If I just give you a rough comparison, if you send a cargo through road, if it costs around 100 rupees, then through coastal shipping it will cost around 20 rupees. So that is the kind of difference is there in road, transportation through road and transportation through coastal shipping and inland waterways. And it is also environmentally safe, environmentally better. If 100 gram of carbon is emitted through a truck for a cargo, then comparative to that only 18 gram of carbon will be emitted if we transport this through coastal shipping or waterways, meaning shipping routes. So it is environmentally better and also cost effective. So that is the advantage. So that is how we are continuously working on that, and we have seen tremendous growth in coastal traffic as well as in inland waterways. Advancements in information technology over the last 2 decades have resulted in the tremendous evolution of project management tools and strategies. Sagarmala is now moving towards providing technology-driven innovative solutions by adopting various cutting-edge technologies like mobile applications, big data, and machine learning. The MIS Lite is a smart application of the MIS tool. It can provide users with real-time project status information. The use of data visualization tools allows for more rapid and efficient decision-making. The real-time project tracking aids in better resource management and yields better productivity insights. The MIS Field-Based app is a ticketing-based smart mobile tool that enhances the project governance operations at various levels by role-based assignments and project tracking via ticket generation.
The project progress is monitored in real time and the data is validated using advanced technologies like geotagging and geofencing, which eliminates the possibility of erroneous data generation. This also assists in the attainment of data granularity, which supports the development of better strategies to optimize the workflow. Hence, the Sagarmala mobile applications will help in overcoming the previous limitations and will benefit users in day-to-day project management more effectively. और अब हम निवेदन करते हैं चेयरमैन RWAI श्री संजय बंदोपाध्याय आपसे कि कृपया सागरमाला कोस्टल एंड आइलैंड वाटरवेज कार्गो फैसिलिटेशन सेंटर पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें. Only 5,000 kilometers plus of waterways, which we will increase from 16 national waterways today being utilized to 23 national waterways by 30 and 50 waterways by 2047. And we will be reaching 100 million tons per annum this year, and we want to increase to 500. We can see how the developed countries have a share of the waterway. US has a largest in the GDP value. Japan has 34% being utilized. Next, please. IIT खड़गपुर माननीय गणमान्यों की उपस्थिति में शुभकामनाएं. That has played a significant role in the economy of the nation and also in connecting and dispersing cultural elements across the world. Under the able guidance and leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Government of India's Ministry of Ports, Shipping and Waterways has embarked on the journey of developing the first of its kind National Maritime Heritage Complex (NMHC) at Lothal, Gujarat, the world's earliest known dockyard, to showcase India's ancient, rich and diverse maritime heritage. The maritime trade activities were introduced by the Harappan civilization 4,500 years back, which continued through different phases of history till date. NMHC is being developed as a major tourist destination and includes a state-of-the-art maritime museum, lighthouse museum, local town recreation, coastal states pavilions, maritime institute, theme parks, hotels, and eco-resorts. The site for NMHC is located at a distance of 85 kilometers from Ahmedabad. The upcoming international airport in Tolera will help in establishing NMHC as an international destination. The design of the NMHC was guided by the Harappan town planning principles. The citadel, situated at the highest point of the site, would house the most important buildings. The middle town and lower town would contain the remaining parts of the town, based on hierarchy of spaces. Here, at NMHC, the National Maritime Museum is the citadel. The middle town includes the Central Bagicha and Maritime Institute. The lower town consists of recreational theme parks, eco-resorts and hotels. Central Bagicha is an urban solution to the tourist destination of NMHC. The fishery hub spreads over an area of 39 acres, of which the basin area is 21 acres. Currently, the fishery harbour is being used by more than 740 fishing vessels.
the existing facilities are not up to international standards in terms of washing, sorting, packing, and loading the fish to trucks and maintaining harbour clean. In order to meet the international standards, thereby increasing export volume, the Government of India approved for upgradation and modernization of Fishery Harbour at Paradip at an estimated cost of 99.75 crore rupees, with 100% central financial assistance under Central Sector Scheme component of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Ministry of Ports, Shipping and Waterways under Sagarmala, contributing 50% of the project cost and remaining 50% of the cost of the project is borne by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Government of India. The Paradip Port Authority will be implementing the project and grant for this project shall be released to the Paradip Port Authority in installments under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. RRTS MD IPRCL श्री A.K. गुप्ता से की कृपया मंच पर पधारें। मंच की गरिमा में उपस्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व में जहां न्यू इंडिया पराक्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा है, वहीं पर संवेदनशीलता की मिसाल भी है। हमारा मंत्रालय भी फिशिंग कम्युनिटी की आजीविका, सुविधा तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। सागरमाला के तहत 197 करोड़ का प्रोजेक्ट कुलाई फिशिंग हार्बर न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा अंडरटेक किया गया है। इसके द्वारा फिशिंग कम्युनिटी की आजीविका तथा रोजगार को एक नया बूस्ट मिलेगा। तो पहले देखते हैं इसके बारे में एक वीडियो। At present, fishermen are taking shelters inside the port during monsoon. This is causing inconvenience for the port operations, security issues, and hindrance for developing port infrastructure in the spending beach. To create state-of-the-art infrastructure, which will facilitate safe handling of fish catch and to enable better price in the global market, NMPA has taken up the work of constructing fisheries harbour at Kulai under the guidance of Sagarmala's Ministry of Ports, Shipping and Waterways at a cost of rupees 197 crores. The fishing harbour at Kulai will contribute to increase in the fish and crustacean supplies to domestic and foreign markets. The project is estimated to employ 2,720 seagoing fishermen and 1,280 persons in shore-based establishments and allied industries. Fishermen are expected to earn income in the order of 55.27 crore. The sale of fish and other products will bring in revenue of 192.20 crore with an export bill of 33.88 crore. कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट और माननीय सांसद भी यहाँ मौजूद हैं, नलिन कुमार कटील जी। इन सभी की गरिमा में उपस्थिति में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गोवा छोटा है लेकिन टूरिज्म का राजा है। इस टूरिज्म में 4 चांद लगाएगा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल जो होगा मुर्मुगांव गोवा में। इसे सागरमाला के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा फंड किया गया है। आप सभी की सेवा में जुड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT को विकसित करने का एक्शन प्लान तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मुंबई पोर्ट में बड़े बदलाव आ रहे हैं, विकास को गति प्राप्त हो रही है।
गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं उनकी उपस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी मैरीटाइम शक्ति को राष्ट्र विकास का मजबूत इंजन बनाना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने अब किदरपुर डॉक्स के पुनरुद्धार का जिम्मा लिया है। 182 करोड़ का ये प्रोजेक्ट सागरमाला कार्यक्रम के तहत फंड किया गया है। तो इसकी और जानकारी हम प्राप्त करते हैं एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा। आइए देखते हैं। Shama Prasad Mukherjee Port, Kolkata, formerly called Kolkata Port Trust, in short SMPK, is the oldest riverine major port of India, which celebrated 150 years of its service to the nation in 2020, and the occasion was graced by Hon'ble Prime Minister of India. Under Sagarmala program of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, MoPSW, all major ports are implementing different projects for capacity augmentation, improving in connectivity, road and rail, and establishment of port-based industries. For capacity augmentation, so far, KOPT has invested around 700 crore rupees towards all such completed projects and is investing 1900 crore rupees towards ongoing projects. SMPK is planning to harness the immense potential of two waterways, National Waterways 1 and National Waterways 2 in India, to align the trade demand of North and Northeast in India. Recently, a barge with steel shipment was flagged off from Haldia Dock Complex to Pandu, Assam, through the IBP route by Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Minister of Port, Shipping and Waterways, and Shri Shantanu Thakur, Hon'ble Minister of State of Port, Shipping and Waterways. The consistent growth of traffic in HDC and KDS is compelling SMPK to unlock the full potential of different business verticals hitherto underutilized. Keeping this in view, KPD has been nominated as the hub for inland water transportation and to provide cost-effective solution to trade by introducing mechanization of cargo handling facilities. Against this backdrop, project of rejuvenation of Kiddapore docks, KPD 1 West, has been conceptualized through public-private partnership board on design, build and finance, operate and transfer basis for 30 years under the flagship Sagarmala program. Through competitive bidding, Massrs Century Plyboards India Limited, the highest bidder, have been selected for modernization and mechanization of KPD 1 West in 2 phases. In phase 1, 2 dedicated container berths and 1 multi-purpose berth at 2 kpd, 4 kpd and 6 kpd will be developed with a total key length of 416 meters. In phase 2, 3 more berths at 8 kpd. Plyboards India Private Limited तथा President Shri आशुतोष जायसवाल Century Plyboards India Private Limited आपको इन माननीय सम्माननीय गणमान्य मंत्रियों और गणमान्य अतिथियों की गणमान्य उपस्थिति में इस कॉन्ट्रैक्ट को जो अवार्ड कर रहे हैं उस कार्यवाही को संपन्न करें। to provide immense benefits to the region, covering aspects such as economic stimulation, connectivity, and trade. Development of waterways on Gurupur NW43 has been accorded approval by the Sagarmala set. It is envisaged to develop the 10-kilometer stretch from Bengare to Kurur Bridge. Ro-Ro Ropax vessels are set to ply on the stretch, which will decongest the roadways of the Mangalore city region. KMB has also envisaged the development of a dedicated Lakshadweep jetty at Old Mangalore Port to cater to the needs of the Union Territory. The project is primed to offer a lifeline to the Lakshadweep Islands by reviving the sea route between Mangalore and Lakshadweep. Tourism activities, and by extension the economic scenario of the region, shall also receive a significant boost, with tourism-oriented projects
such as the development of beachfront and ancillary infrastructure at Bengaluru, and Gurupur River Island development in Dakshina Kannada district also under process. बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। सागरमाला की श्रृंखला को आगे ले जाकर माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय मंत्री श्री श्रीपद नायक जी, माननीय मंत्री श्री शंतनु ठाकुर जी, माननीय सांसद महोदय, my colleagues on the dais, my colleagues in the audience, distinguished guests, and all the participants who are the most important stakeholders in the Sagarmala program and have contributed a lot for its success and will continue to work with renewed vigor to make sure that all the projects for which the awards and the agreements which have been signed, we are able to complete it in time. At the outset, मेरा आप सभी को अभिनंदन एवं नमस्कार. I, at this occasion, take immense pride and happiness in addressing you, and the highlights of the achievements have already been presented before you. Thanks in the maritime sector. As you have seen, the major ports, the capacity has more or less been doubled, in the sense that today we have a capacity of about 1560 million metric tons at our major ports for cargo handling. The volume of cargo handled has also increased. The last year being adversely impacted because of COVID, the ports handled about 672 million metric tons of cargo. This year, by February, they already done 650 million metric tons, and by the end of the year, hopefully, the ports put together will do more than 700 million metric tons. So is increasingly being containerized, and on the front of container handling also, our ports year after year have been increasingly handling more of containers efficiently. While the capacity has been added, the ports are also increasing their efficiency. On the ranking of ease of doing business, there has been substantial improvement. The turnaround time, which used to be there for containers, for example, when the Sagarmala program started as JNPT, it used to take something more than 37-38 hours. Today, the JNPT port has reached close to 25 hours of turnaround time, so there has been substantial improvement. And our ports today have sufficient capacity, so there is no congestion. While the world today is, in some of the major transshipment hubs, grappling with the problem of congestion. But our ports have sufficient capacity, they have improved, working efficiently, and very many of the transshipment cargo which was to take place at some of the other locations. For example, in Tuticorin recently there have been vessels which have come because of the excess capacity that they have and the kind of services our port are in position to offer. As you heard, the Sagarmala program itself has 5 verticals. The important vertical being to increase the capacity of their ports, to modernize them, but at the same time, increasing the component of coastal and inland waterways and ro-ro and ro-pack services has been a very important component, so that we are able to reduce the overall logistics cost, which is the primary purpose of the Sagarmala program, so that our trade, our businesses are able to reap the benefits and become globally competitive. Sagarmala program has been largely successful in doing it, and with the new Gati Shakti program that has been announced, the entire effort that we put in will get further accelerated. And in the days to come, I am sure, with the active involvement of all our friends who are present here,
and the entire maritime industry and the other people who are involved in the logistics supply chain, we should be able to truly get the full benefits of these coordinated action that we are taking with all the stakeholders in terms of the Sagarmala initiatives, as well as the Gati Shakti initiative which has been launched. I would like to mention a number of projects have already been explained in terms of fishing harbors which have been undertaken, in terms of the ro-ro pack services which have been launched. Some of them are path changing, are going to bring in new entrepreneurs, and I'm sure will change the landscape, the maritime landscape in the days to come. And we from our side would make sure that all the support and assistance that is required, and with the help of all of you, we should be able to create a new maritime environment so that the country benefits, the business benefits, and we become globally competitive. And I like. नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री जी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उपस्थित मंच पर माननीय मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी, श्री नवीन कपिल जी हमारे एमपी हैं, श्री एस मुरली स्वामी जी हमारे मंत्री, हमारे एमपी हैं, श्री संजीव रंजन जी, श्री संजय बंदोपाध्याय जी, श्री राजीव जलोटा जी, श्री भूषण कुमार जी, और सामने उपस्थित विभिन्न पोर्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अधिकारी और पत्रकार बंधुओं और जितने ऑडियंस हमारे सामने उपस्थित है, सबको मेरे तरफ से नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय में हम लोग यहाँ अम्बेडकर भवन में उपस्थित हुए हैं, उसका मूल उद्देश्य है सागरमाला के 7 साल बीते हुए और जितने सुपर फ्लो में हम लोगों ने 7 साल में काम किए हैं, उसी का निदर्शन आज हम लोग सबके सामने पेश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुहूर्त है, जिस मुहूर्त पे हमने यहाँ उपस्थित हो पाया और सबके साथ ये खुशी का समय बिता पाए हैं। आप लोग जानते हैं, भारतवर्ष का इतिहास अगर देखें तो विश्व में भारतवर्ष के नाम पे एक ही देश है जिसके नाम पे एक सागर है, और हम लोग इतना लाकी हैं कि भारतवर्ष का जो जियोग्राफी है, वो जियोग्राफी पूरे वर्ल्ड में, अर्थात ये मैरीटाइम सेक्टर में हमारा जैसा इस्तेमाल होना और जैसे हमको चाहिए, भारतवर्ष के तीनों साइड में समुंदर भरे हैं और हमको चाहिए था और भी 50 साल पहले इसका और भी डेवलपमेंट करना और मैरीटाइम सेक्टर को ध्यान देना, लेकिन ये हो नहीं पाया है। अब देखिए, आज़ादी के बाद 70 साल 75 साल बीत गए हैं, मैरीटाइम पोर्ट शिपिंग वाटरवेज इसको लेके पिछले सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से हमारे सरकार आए हैं और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में जो काम हुआ है, हमको लगता है भारतवर्ष अगला 50 साल में सिर्फ एशिया नहीं, विश्व के पहला स्थान ग्रहण करेगा। ये हमारा लक्ष्य है और हम ये करके दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय मंत्री जी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में। हम अगर गौर करें कि सागरमाला जो प्रोजेक्ट हमने
पिछले 7 सालों के जितने जल्दी हमने प्रोग्रेस किए हैं, ये जरूरी था, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा जो स्थिति है, हम विश्व में पावर के नाते चतुर्थ स्थान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये सेक्टर को हम डेवलप करेंगे तो और भी मजबूत होंगे, और भी मजबूत नहीं होंगे, हमारा कोस्ट लाइन, हमारा हर एक पोर्ट डेवलपमेंट होगा। राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक जी भी मौजूद हैं, जो कि पूर्व में आयुष मंत्री का भी कार्यभार संभाल चुके हैं, रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारियों को भी पूर्व में बखूबी निभा चुके हैं। हमारा आपसे निवेदन है माननीय, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। Dignitaries on dais, आदरणीय श्री सरबानंद सोनोवाल जी, Hon'ble Minister of Port, Shipping and Waterways, श्री शंतनु ठाकुर जी, MOS Port, Shipping and Waterways, श्री नलिन कुमार कटिल जी, हमारे MP एंड बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका, हमारे MP श्री मुरली स्वामी जी, डॉक्टर संजीव, हमारे सेक्रेटरी पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री भास्कर कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी पोर्ट एंड शिपिंग, श्री संजीव बंडोपाध्याय जी, चेयरमैन IWAI, श्री राजीव जलोटा जी, चेयरमैन मुंबई एंड गोवा पोर्ट अथॉरिटी, all the dignitaries of the dais, member of press of the electronic media, ladies and gentlemen, I am extremely pleased to be here. The commemoration of the completion of 7 years of the Sagarmala program. With so much already captured by the other speakers before me, I would like to inform about the impact of Sagarmala program has made in the pillars of inland waterways and coastal shipping and coastal community development. As you recall, Inland Waterways Authority of India was set up in 1986 for development and regulation on inland waterways of the country for shipping and navigation as per IWAI Act 1985. 111 inland waterways, including 5 national waterways declared earlier, were declared as national waterways by the National Waterways Act 2016. Out of remaining 106 waterways project, 26 national waterways project as of now have been considered for development both for cargo and passenger movement. Based on development activities have been taken up in 13 most viable national waterways based on feasibility reports. National waterways 1 is Ganga Bhagirathi Hooghly river system from Allahabad to Haldia. National waterways 2, river Brahmaputra from Dhubri to Sandhya. National waterways number 3, west coast canal from Kottapuram to Kollam along with the Jalamari Vikas project and JMVP 2, multimodal terminal at Varanasi and Saibaganj already completed and MMT at Haldia is scheduled for completion by July 2022. New navigation loop at Farakka will also be completed by October 2022. In addition, Dhubri and Sandhya stretch, it is 891 km of the river Brahmaputra National Waterways 2 is being developed with the investment of rupees 461 crore and development of the river Barak and Indo-Bangladesh protocol route with investment of rupees 145 crores. In fact,
very recently, Pandu and Assam received the full grains from the Patna via Indo-Bangladesh protocol route. As a step towards the improving the efficiency and effectiveness of the various activities and to ensure the ease of doing business, digital solutions have been developed to enable stakeholders to have access to key information of national waterways. समर्पित व्यक्तित्व का साइन भी प्राप्त हुआ है। आप एक अद्भुत जुझारू और डायनामिक राजनेता हैं। आपकी कर्मठता मंत्रालय में हम सब के लिए ऊर्जा की तरह है। माननीय आप असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हमारी आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राह। नमस्कार। सागरमाला सफलता की 7 साल, यानी कि ये जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में पिछले 7 साल की यादें फिर से उजागर करने में हम सब लगे हुए हैं, सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज की इस सभा में उपस्थित हमारे मंत्रिपरिषद के साथी मंत्री श्रीपद नायक जी, शांतनु ठाकुर जी और हमारे संसद साथी नलिन कुमार कटेल जी, एस मनीष स्वामी जी और हमारी मंत्रालय की सचिव डॉक्टर संजीव रंजन जी, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय जी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की चेयरमैन राजीव जलोटा जी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भूषण कुमार जी, जो सागरमाला को विशेष रूप से देख रहे हैं, सागरमाला प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दायित्व निष्ठा से निभा रहे हैं और हमारे सामने बैठे हुए अलग अलग पोर्ट की हमारे अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण और हमारी मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरीगण, डेप्यूटी सेक्रेटरीगण, डायरेक्टरगण और आज इस सभा में उपस्थित हमारे जो भी अलग अलग प्राइवेट कंपनियों का जो हमारे माननीय सदस्यगण और उपस्थित हमारे माननीय पत्रकार बंधु और सभासदों, सबसे पहले मैं सागरमाला की 7 साल होने के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारे देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपने हैं, जिसको साकार करने में हम प्रतिबद्ध हैं। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को विशेष रूप से सक्षम करना होगा, यानी कि यूथ लेड डेवलपमेंट। और उसी हिसाब से सागरमाला परियोजना को लाया गया है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, यानी कि हम दुनिया से कैसे हम मजबूत रिश्ता बनाए और व्यापार को देश की आगे बढ़ाए और दुनिया में अपना पहचान बनाए, जगह बनाए। ऐसे एक लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके लिए तय किया है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना का भाषा को अगर हम ठीक से समझ पाए तो हम इस परियोजना को
सफल रूप दे पाए। यानी कि ये जो सागरमाला कोस्टल इलाका में जैसे हमने अपने पोर्ट का साथ साथ अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में हमने अलग अलग इनिशिएटिव लिया है, इसी को कैसे हम सही मायने में मजबूती से खड़ा करें, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यानी कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए हमें कैसा व्यवस्था खड़ा करना होगा, ये सवाल का जवाब हमें देना होगा। सागरमाला में जुड़े हुए ये पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को ये जवाब देना होगा देशवासियों को। ये के अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, सारे मंत्रालय के अधिकारीगण सब बैठे हुए हैं। हम सबको टीम इंडिया की स्पिरिट से, भावनाओं से एक साथ जुड़ के काम करना होगा और सागरमाला परियोजनाओं को जमीनी हकीकत में लागू करने के लिए हमें प्राइवेट प्लेयरों को साथ लेके आगे बढ़ने का हमने निर्णय ली है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है, ये पार्टनरशिप से हमारी शक्ति बढ़ेगा और हम सब हिंदुस्तानी हैं। देश भारत माता की हम सब सुपुत्र हैं और पुत्र होने के नाते हमको ये बात हमेशा मन में रखना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए जो सपने तय किए हैं, इसको पूरा करने का दायित्व हमें भी निष्ठा से निभाना होगा। तो पिछले 7 साल की जो भी सफलता की जो भी हमारे अनुभव है, इससे काफी साहस मिलता है, ताकत मिलता है, जुनून पैदा होता है, उमंग पैदा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई पीछे देखेगा नहीं। आप तैयार हैं ना? क्योंकि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, टीम इंडिया, हमारे टीम इंडिया का कैप्टन माननीय प्रधानमंत्री जी है। हम सब इसी टीम का एक सदस्य है। इसलिए हमें इस विषय पर एक साथ मिलकर मेहनत करना होगा, क्योंकि आप सबको मालूम है मेहनत का बिना मंजिल दिखाई नहीं देती है। अगर मंजिल हासिल करना है तो मेहनत करना होगा। इसलिए there is no shortcut to success. If you want to shine, you'll have to burn like a sun. That's the representation of work culture. So I believe with that spirit, we'll have to motivate within ourselves. We'll have to start up within ourselves and develop our personality in such a way. We'll have to develop our will in such a way that we could achieve our goal as per the target set by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. तो इसलिए सागरमाला के जरिए हम देश के 135 करोड़ जनता को साथ लेकर हम दुनिया में विजय हासिल करने के लिए हमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। और आज मैं ज्यादा आंकड़ा बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि अधिकतर हमारे आदरणीय हमारे मंत्री परिषद की साथी ने बताया और अधिकारी भूषण कुमार जी, हमारे संजीव रंजन जी ने भी बताया और बंधु पाटिल जी ने भी बताया। लेकिन आज एक आंकड़ा बताना जरूरी है। जैसे हमारे टर्न अराउंड टाइम अभी कंटेनर के सिलसिले में मैंने देखा, मुझे सूची दिया, संजीव रंजन जी ने दिया मुझे सूची, भूषण कुमार जी ने दिया, देखा मैंने कि हमारे पहले
2013-14 में हमारे टर्न अराउंड टाइम 44.70 इतना थे, अब घट के 26.58 पर आ गए। यानी कि हम सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते क्वालिटी सर्विस देने में हमने सफलता प्राप्त की है। कम समय में सामान लोडिंग अनलोडिंग का जो व्यवस्था हमने खड़ा किया है पोर्ट में, आधुनिक क्रेन का व्यवस्था हमने खड़ा की है और उसी हिसाब से बार्ट डेवलप किया गया है। जो भी टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन इस विषय पर शामिल करने का सवाल है, इन सवालों का जवाब हम कर्मों के जरिए देकर आज के सफलता प्राप्त करने में हम आगे आए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान पीछे है। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा हकीकत बताते हैं कि हम पिछले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कम दिनों के अंदर जो परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हम सफलता प्राप्त की है, इससे हमारी नई पीढ़ियों को साहस मिला है, युवाओं को साहस मिला है, महिलाओं को साहस मिला है, सबको ताकत मिला है देश को आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का ही एक जर्नी शुरू हुआ है, क्योंकि देश को अगर आत्मनिर्भर बनानी है तो निश्चित रूप से हमारे भी शक्ति बढ़ाना होगा, हर व्यक्तियों का शक्ति बढ़ाना होगा, हर नागरिकों का आत्मविश्वास जगाना होगा। मुझे लगता है इसी हिसाब से अपने देश को हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करें। उसी लक्ष्य को सामने रखकर आप सब अपनी कर्मभूमि पर जिस हिसाब से आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, एग्रीमेंट हुआ, एक्सचेंज हुए, प्राइवेट पब्लिक का बीच में एक्सचेंज हुई, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंटेलिजेंस, विजडम, एबिलिटी, कमिटमेंट, ये देश के लिए है। ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ विजडम हुआ है, ये जो एक्सचेंज ऑफ मोटिवेशन हुआ है, एक्सचेंज ऑफ यूनिटी हुआ है, ये देश के लिए है। देश के लिए ये संदेश है कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और भारत माताओं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर हम मर्यादा पूर्वक वहां हमारे देश का पहचान बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। चंद्रा जी जितना भी है हमारे शहर में, सबको मैं विशेष रूप से टीम इंडिया का आप सब मेंबर है, सब यहाँ जो बैठे हैं, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। We have all glorified the success story of Sagarmala in 7 years. और आज हमारे दो संसद साथी, अगर मैं उनको धन्यवाद ना दूं तो नाइंसाफी होंगे। हमारे कर्नाटक से एस मुनीश स्वामी जी, आप दोनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आया, हमारा हौसला बढ़ाया, हमें सहयोग किया और साथ साथ में हमारे दोनों मंत्री परिषद के साथी नायक जी और शंतनु ठाकुर जी, आप सब हम एक साथ लगे हुए हैं और हमारी जो कमिटमेंट है तीनों सेक्टर में, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, तीनों सेक्टर में आज देशवासियों का बीच में इस चर्चा का विषय हुआ है, बिंदु बने हैं। ये सबसे बड़ी सफलता है। जब देशवासी चर्चा करेंगे, चर्चा का साथ साथ अपेक्षा भी करेंगे। अपेक्षा जब करते हैं तो उम्मीद बढ़ता है, सपना जागता है ना? तो उसी हिसाब से आज पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज देश की चर्चा का बिंदु बने और इससे साफ जाहिर है हमारे विद्यार्थी, हमारे किसान मजदूर, हमारी महिला, हमारे युवा, हमारे हर क्षेत्र में अपने अपने कर्मभूमि में निष्ठापूर्वक जो लगे हुए हैं, सबका मन में ही इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन
ये जो उन्होंने शुरू किया था और वास्तविक हकीकत में इन चीजों को जमीन का साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त किया है। तो इसलिए जब नेता ऐसी ईमानदार और निष्ठावान और मेहनती और ज्ञानी ऐसे एक महान नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जाग उठा है और देश अपना काबिलियत को दुनिया के आगे दिखाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए मैं मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हमारा मंत्रालय अलग अलग कामों में आगे बढ़ने की सफलता प्राप्त की है। इसी शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए पत्रकार बंधु आपको भी धन्यवाद देते हुए जो आंकड़ा हमारे अधिकारी ने बताया आप निश्चित रूप से देशवासियों का आगे रखिएगा, क्योंकि आपके बिना तो हम घर घर नहीं पहुंच सकते। इसी शब्दों का साथ सबको फिर से धन्यवाद। जय हिंद। डेवलपमेंट द्वारा भारत की फुल इकोनॉमी को आगे ले जाने में हमारा पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में समर्थ रूप से निभा रहा है। हमारा सबका प्रोत्साहन बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से सम्माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रहते हुए भी हमारे बीच में उपस्थित हुए और हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और कर्नाटक राज्य में सागरमाला द्वारा जो विकास किया जा रहा है उसको प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा, उसके लिए भी मैं मंत्रालय की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे आदरणीय सचिव डॉक्टर संजीव रंजन जी और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री संजय बंदोपाध्याय जी का भी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर और इस कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने में उनके प्रत्यक्ष सहभाग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। भारत एवं राज्य सरकारों के पत्तन विभाग से संबंधित और फिशरीज विभाग द्वारा से संबंधित एवं सागरमाला में सहयोग करने वाले भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के संबंधित अधिकारियों और हमारे मंत्रालय से संबंधित सभी अधिकारी व कर्मचारी गण का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अधिकारी और कर्मचारी का धन्यवाद जिन्होंने आज इस समारोह को सफल बनाने में अमूल्य योगदान दिया। थैंक यू।